पहली बात तो देखिए, प्लेन क्रैश स्टोरी आउट है, रशियन एंगल आउट है, जासूसी चल रही है। जासूसी नेताजी के परिवार के मुंह से गलती से निकल गया था, अब वो कुछ और बोल रहे हैं, तूती उनकी चेंज हो गई है। 84 तक हो रही थी उनके परिवार की। तो अगर वो रूस में मर गए तो भैया वो तो स्टालिन तो मरा 53 में, तो 84 तक इंक्वायरी करने की जरूरत क्या थी उनको सर्वेलेंस में डालने की। अब आता है कहानी आपकी सो कॉल्ड गुमनामी बाबा। देखिए गुमनामी बाबा जो आपका कैरेक्टर था, पहली बात हिज नेम वाज नॉट गुमनामी बाबा, ही वाज अ very strange character. He did not show his face to anybody. He remained, hidden in a room all the time. If he at all would go out, he would go out at night. He would cover his face. You go inside the room, he would cover his face. It's very difficult to meet him. But as and when people got wind of him, somebody saw his face, somebody heard him speak. Baba ji to अंग्रेजी बोलते हैं. Baba ji speak very good English. Baba ji is a former ISIS officer. Somebody saw his face. Oh my God, Subhash. वो यहाँ से मैदान छोड़ के भाग जाए. He would go to some other place. And he kept on changing. He was in Manpuri. He was in लखनऊ, ही वाज दिस एंड दैट थिंग, करते 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 वो निकल जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी आदमी ने उनसे पूछा कि आई वांट टू मीट यू, बाबा है, बाबा को पूछा बाबा जी आपसे मिलना है, मेरे को आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना चाहता हूँ, बातचीत करनी है। तो उसको डॉज करने के लिए द सो कॉल्ड गुमनामी बाबा रोट हिम अ लेटर। एट दैट पॉइंट इन टाइम गुमनामी बाबा वाज लिविंग इन वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आज के ज़माने में आप वहाँ जाएंगे और वहाँ आपको कि बाबा मिल जाए जिसको अंग्रेजी का एक शब्द आता हो तो मैं नाम चेंज कर लूँगा। तो गुमनामी बाबा ने उसको आंसर दिया, आई एम अ bona fide Daishnami sannyasi and you will know that a man under the holy orders incurs death according to the civil laws and a sannyasi is dead to his former life. It is in the keeping of divine mother Durga and father Lord Shiva. In passing you shall find cogent answers to. This is not a Baba's way of writing. He is writing like a bureaucrat. Whoever it is, I mean, I am posted in Basti. Suppose if I am posted in the local intelligence unit, I come to know today in 2020 कि बाबा आया शहर में और बाबा जो है ना टाइम मैगजीन पढ़ता है। मैं शाम को डालूंगा रेड उसके घर में, कौन सा बाबा आ गया टाइम मैगजीन पढ़ने वाला। यू आर टेलिंग मी 1960s में बाबा की रीडर डाइजेस्ट, टाइम मैगजीन, पीजी वुड हाउस, चार्ल्स डिकन्स एंटायर कलेक्शन, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय कलेक्शंस आ रहे हैं, बंगला बुक्स आ रही है, ये आ रहा है वो आ रहा है। कौन से बाबे पढ़ते हैं रीडर डाइजेस्ट पढ़ते हैं, कौन से बाबे पढ़ते हैं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, राधा विनोद पाल वॉर क्राइम्स ट्रायल्स ऑफ सारे पे कमेंट मार के छोड़ा हुआ है, नेताजी इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट कमेंट मारे हैं, काट फूट कर रखी है। ऐसे नहीं होता। This is his handwriting. Baba was an expert in everything. He used to talk about himself. He would say, "You're dead man." Very few people could meet him very even. You're dead man. He was not Gumnami Baba. That was a name given by media after he died. So जैसे ये उनका example है, क्या बोलते थे उनके, he used to talk about wars. Very expert. He was somebody who was very well versed with the war and art of war. For example, ये उनके words हैं. Whether war should be brutal, cathartic, or human business beside the point, everyone knows that no war can be conducted and fought with kid gloves. He's talking in the context of Chinese War 62. Modern war especially takes an appalling toll both in human life and property. No civilized nation risks it lightly, but when it's forced on, it has to be waged in a manner that makes the opponent wince. This is not done in any vindictive spirit, but in a cold, calculated manner to break the opponent's morale, so that he is forced to sue for peace. Abstract principles have nothing to do with the waging of war. बाबा गुमनामी बाबा बैठ के 1962 की लड़ाई में ऐसी बातें कर रहा था जो मेरा मानना है कि उस जमाने का डायरेक्टर आई भी नहीं कर सकता। Very good commentary about how to fight a war. What are the rules of elementary rules of warfare? And जैसे ये उनके words हैं उन्होंने लिखे थे, when your dead man, that means himself, when your dead man was in Berlin, a great German doctor scientist became very friendly. And in the course of his talks, he said that in his lab he found out that radar beam particles do not bounce back if they strike something. And the doctor felt astonished. The doctor could not inform any of the government agencies or other scientists he was a bombing great casualty. He was talking about stealth technology, which was not known. Americans had it. They were trying to do it in what is known as the Area 54 in America, where you think UFOs come. No, they tried stealth technology. Gumnami Baba was talking about stealth technology. He said there are certain things which I have not mentioned here. If you use them, you can actually evade radar. The only point I'm driving at, this is not a Baba that you are talking about here. There's no Baba. Then of course he is mentioning about his own life, so on and so forth. ये बंगला में तो आप पढ़ सकते हैं. The news of the plane crash with the smoke screen, the lies was known to keep people in the government. That is the unadulterated truth. Talks about Russia, Soviet Russia. Talks about Stalin. Stalin did not behave like an enemy towards me. My own people did. Talks about plane crash. Talks about his family. Talks about this is done from Bengali into concentration camps on central Siberia contain male, female laborers, farmers, craftsmen, authors. गुलाब की बात कर रहे हैं. गुलाब में क्या होता है? रशिया में जो गुलाब होते हैं ना, जहाँ को he was talking about that. When he died, of course, तो तब तक सारी चीजें कवर अप थी. He died. He was cremated on the ghats of Saryu river.
विच इज अ प्लेस कॉल्ड गुप्तार घाट, जहाँ पे भगवान राम ने जल समाधि ली थी। ये इसके पास है। मरने के बाद बवाल मच गया, कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई उनके सामान को देखे, उनका सामान वहाँ पे जो मिला वहाँ पे, उसमें से कुछ स्पेसिमेन है, उनकी घड़ियाँ बढ़ गया। नेताजी वॉज गिवन अ गोल्ड ओमेगा गोल्ड वॉच बाय हिज मदर। तो दिस मैन हैड ऑफ कोर्स एन ओमेगा, किसकी हमें पता नहीं, बट ही हैड अ रोलेक्स गोल्ड वॉच। Gumnami Baba, what you think is not, it's like a person sitting behind the curtain. He's got a cigar in his mouth or pipe like this. He speaks in English and Bengali, Caucasian accent, talks about security, intelligence, so on and so forth. There's no Baba. This much, that's the only point I'm trying to drive it. उनका सामान ओमान ये सब है वहाँ पे, ये उनका चश्मा। This does not prove anything. It's very, 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 I mean, the whole sign of somebody was very, upper, बहुत पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट अमीर आदमी का जैसे टेस्ट होता है वैसा टेस्ट था उनका, म्यूजिक में, उन चीज़ों में, हर चीज़ों में। He had, he was virtually carrying a library with him. Why would the Baba be wearing libraries? A lot of pictures of Netaji's family, especially of his mother and father, and they were sent to him as if they were pictures of his own mother and father. An umbrella was sent to him. He said the umbrella of Father Jankinath Bose. And this Baba was keeping it with a reverence, सिल्क में लपेट के ऐसे करके रखा होता। माँ बाप की फोटो सारी लपेट, और ये वर नॉट ऑन डिस्प्ले बाय द वे, nobody could enter his room, they were not on display. So after he died, they entered the room, they found these things there. So he was keeping everything under secrets. ये सब वहाँ का मान गया। उसके बाद में कहानी ये है कि नेताजी की फैमिली जब ये बवाल मच गया वहाँ पे यूपी में, नेताजी की फैमिली के 2 लोग वहाँ पे गए। आजकल ये लोग बोलते हैं कि अनुसर कर रहा है, भैया मेरा चाचा नहीं गया, तुम्हारी बुआ थी वहाँ पे, मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? अमित मित्रा की आंटी गई थी वहाँ पे, मेरी आंटी थोड़ी ना होगी। ये जब बवाल मचा तो नेताजी की फैमिली के 2 लोग वहाँ गए, एक उनकी भतीजी ललिता बोस और एक उनका भांजा मिस्टर रॉय। क्योंकि नेताजी की फैमिली थी ना, शरद, सुरेश, तारूबला, सुभाष। तारूबला वाज मैरिड इन गोरखपुर, व्हिच इज नॉट वेरी फार फ्रॉम देयर, शी हैड डाइड लॉन्ग अगो। उसका लड़का वहाँ गया था, he didn't say anything. Bhagwat, he remembered, by the way, his sister. He talked about house in Cuttack and he talked about it. ललिता बोस ने बोला ये तो मेरा अंकल है, she said publicly, went to court of law about it. She was the one who triggered the whole thing by going to court of law. कोर्ट ने कहा सारा सामान सील करो, इंक्वायरी होनी चाहिए इसके ऊपर। अब उसको छोड़ दी। Let's come to the basic point. Why do we support the Gumnami Baba theory over these other 2 theories which I've just discussed out here? उसके मोटे मोटे 3 रीजन हैं, and the third one of course will the reason why my friend has brought me here, scientific reason. A eyewitness account, credible eyewitness account that people who were linked to Netaji, even otherwise, credible eyewitness account is very important in courts of law. You can be hanged if there are credible eyewitness account. In fact, most would not know this thing probably, a clash between a DNA report and a credible eyewitness account. If I say this is my uncle, your report says no, I will win. He's my uncle, I know him. You may have said this is Indian Supreme Court verdict. There are certain eyewitness accounts which cannot be ignored. So credible eyewitness account of people. Now in this case you have across 30-40 years, 30-35 years, people who saw him, identified him as Subhash Bose. ठीक है, कुछ लोग मर गए, जिंदा थे, वो अलग कहानी, but essentially that is the case. Some of whom were known to Netaji. All of them were not, there is no reason or motive to tell lies. In fact, they did not even talk about it as long as they lived. अब इनकी शक्ल से क्या दिखाई देगा? This guy, आप शक्लें देखेंगे, he died in Dum Dum Park in 1993. तो आप मिलेंगे तो अंकल जी क्यों जा रहे होते थे? This man was Dr. Pabitra Mohan Roy. He became, he was a revolutionary, he was a doctor. Followed Subhash Chandra Bose. He became a INA Secret Service agent. Don't look very, they're inconspicuous by the presence. That's all filmy stuff. You send somebody who's very dashing, you're caught in 1 second. And nobody goes to the foreign country like that. It's all nonsense. So real life spies are more like him or Ajit Doval, etc. He died for Subhash Bose. They came on a mission here. They were supposed to support us. They were caught and they were hanged to death, supposed to be hanged to death. But ये वो लोग जिन्होंने नेताजी को सर्व किया था, उनके लिए मरने मारने को तैयार थे। इसके 85 लेटर वहाँ से मिले हैं। सारों के सारों में आपको मालूम चल रहा है कि he thought he was Netaji, he was serving him. Of course, I know his son, I know his granddaughter, I met her in America. ये सारी कहानी है। अब जैसे एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। One of the person who met him was INA Secret Serviceman Anil Chandra Das.
Now ये डॉक्यूमेंट यहाँ जो आपके सामने आ रहा है कि नेशनल आर्काइव से आया, ये 97 में डिक्लासिफाई हुआ था। Gumnami Baba was dead by 1985, so obviously you couldn't have known. This is a classified information. But if he knows about it, he cannot be a Baba. इनमें ये लिखा हुआ है कि on the last night in Bangkok, Mr. Bose had a long talk with Devnath Das and A.C. Das. कि कोई certain A.C. Das और देवनाथ दास से सुभाष चंद्र बोस की बात हुई थी जो INA इंटेलिजेंस के थे। इनको नहीं पता था, लेकिन they thought they were in INA, but they were in INA intelligence, which is a very secret unit of INA, which was reporting to सुभाष बोस directly. बाद में एक लेटर और हाथ लगता है डिक्लासिफिकेशन के बाद, जिसमें नेताजी के हाथ का लिखा हुआ एक नोट है साइन किया हुआ, उसमें मेंशन कर रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस इज राइटिंग अ लेटर टू हिकारी किकन। हिकारी किकन इज द यूनिट, सीक्रेट ही थी उस जमाने में, जो जापानीज गवर्नमेंट के और सुभाष बोस के बीच में लियाजन करती थी। हिकारी किकन का हेड था जनरल इसोदा, जो प्लेन क्रैश से पहले वहाँ मौजूद था, आपके बारे में बताया था। तो वो लिख रहे हैं हिकारी किकन को कि प्लीज गिव सम करेंसी, सम मनी, सम हैंड ग्रेनेड, रिवॉल्वर्स एटसेट्रा टू this man A.C. Das, whom I'm sending you with this report. When A.C. Das gets to meet the so-called Gumnami Baba, Baba asks him what happened to that thing which I had given you when we last met. And he writes a detailed note about it, sends to Gumnami Baba, found in Faizabad, confiscated on court orders, and he gives a detailed account of it. I received 2 wireless sets and a few revolvers, pistols and 10 guns from Hikari Kikan. Exactly वो बात उसको repeat कर रहा है. And he was corrected. No, you got it wrong. When we last met, we did not meet at this time. We met at that time. And he writes, if you can read Bengali, कि when we heard the news of the plane crash, I knew there will be news like this. तो इस तरह से पूरे डॉक्यूमेंटेड चीजें निकल के आ रही हैं वहाँ पे करके। तो लोकीनाथ चक्रवर्ती, आपको बताऊंगा बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। जैसे ये रेवोल्यूशनरियों के बहुत रिवर्ड लोग थे, तो लोकीनाथ चक्रवर्ती महाराज 30 साल तक जेल में गए, काला पानी में गए, मैंडले जेल में गए, मैंडले में सुभाष उनके साथ था। कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर कभी काला पानी में नहीं गया, कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर मैंडले में नहीं गया। बड़े खतरनाक जेल थे ये लोग। मैंडले में तिलक गए थे और सुभाष गए थे। और ये आदमी ईस्ट पाकिस्तान में रह गया था, इसने बांग्लादेश में लोगों को बहुत तंग किया। ही डाइड इन 1970, ही केम टू इंडिया, ही वाज फेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ही डाइड नेक्स्ट ईयर बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। ही वाज अ वेरी वेल नोन, वेरी रिवर्ड फिगर ऑफ इंडिया, बट ही ऑफ कोर्स ही बिकेम वेस्ट पाकिस्तानी। बट इनको बताया गया, वो बताने का जो स्टोरी है वो बड़ी स्पाई लाइक स्टोरी, कैसे महाराज वाज इन्फॉर्म्ड दैट ही इज अलाइव एंड ही इज इन इंडिया, एंड देन ही राइट्स अ लेटर टू Gumnami Baba which is found there, in which he is writing to clearly suggest that he is talking about Subhash Bose without mentioning his name. The person, I'm reading on the translated part, the person with whom I was lodged in Mandalay jail, played tennis and participated in Durga Puja, I have not forgotten him, Subhash Chandra Bose. I am still with him. In Delhi in 1940 at Shankar Lal's residence, I was with him. Shankar Lal was the forward bloc general secretary with Subhash. I was by side while we toured, United Province, Uttar Pradesh. On a chilly night in Agra ground, hundreds of people were waiting. He's talking about Netaji going to Agra. I gave a lecture in Agra and somebody said that my grandfather was in that, of course Netaji had a rally there. I'm eagerly awaiting for the same person. The oppressed and tortured people of East Pakistan are waiting. ये सब लेटर में लिखा था, आप कब बाहर निकल के आएंगे, हम लोग कितना वेट करना पड़ेगा, हम लोग बुढ़े हो रहे हैं। So they were, all of them were asking him to come out, so and so forth. So you have credible eyewitness account. अब ये मुझे लंबा खींचना पड़ेगा कि लीला रॉय जिनकी पार्लियामेंट फोटोग्राफ लगी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अनवील की थी। She knew Subhash Chandra Bose from the time they were teenagers, so obviously Leela Roy would know better, and she has the stature. बंगाल से आपके 3-4 लोगों की ही फोटो लगी है पार्लियामेंट में, उनकी लगी है। तो why a person of such stature obviously will not tell lies, and she would not. After she met him, of course, there was like जब उनकी मीटिंग होती है तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि मेरे बारे में तुम लोगों को बताओ। Tell Sejda, tell my brother Sejda Suresh Bose that I am alive. Tell my friend, tell Dilip Roy. Dilip Roy was Netaji's best friend. कुछ और के नाम दिए, कुछ बिजनेसमैन के, जो मतलब पर्सनल फ्रेंड्स को बोला। So Dilip Kumar Roy was this is Netaji's friend, personal best friend. Himanta was also good, but Himanta had died by that time. This is Netaji in Oxford, sorry Cambridge. He was in Cambridge. ये दिलीप रॉय बैठे हुए, ऊपर नेताजी खड़े, वन इज सीसी देसाई, अनदर इज मिस्टर बैनर्जी। तो ये वो ICS वगैरह टाइप के लोग थे, वो सब थे। और दिस इज दिलीप कुमार रॉय बिकेम अ होली मैन, ही वाज अ वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड मैन लाइक नेताजी। तो इनफैक्ट गुमनामी बाबा ने, मतलब ये जो लेटर लीला रॉय ने इसको लिखा है, उसमें लिखा हुआ है कि शी इज राइटिंग टू दिलीप कुमार रॉय, आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट योर फ्रेंड, please forgive me for my handwriting, my hand is shaking because I just suffered a cerebral stroke. She suffered a stroke because she was under tremendous pressure when she came back to Calcutta after meeting Gumnami Baba. I want to tell you something about your friend. He is alive, he is in India. English mein likha hai. And he said he remembers you, and he says it was Dilip who always wanted to make me mistake.
बाबा अंग्रेजी बोलता जाता तो उसमें दिस इज हाउ इट इज। और बहुत सारे लोग, अब समर को छोड़ दीजिए, बहुत से लोग हैं, जैसे एक लेटर है, मैं इसके बाद बंद करूंगा ये, मतलब इस पोर्शन को। ये एक लेटर है, बांग्ला में तो आप पढ़ सकते हो, तो ये तो मैंने बाहर के लोगों के लिए आपने लिखा है। इसमें लिखा हुआ पर ये गुमनी में बाबा का हैंड राइटिंग है। I gave all my love and affection to Sukrit after Sejda sent him with this long letter. After that, I continued corresponding with him, Sejda, till 1 month before his demise. Fortunately, he was able to destroy all those letters in time. 77 में ये लिखते हैं, आप बंगला पढ़ सकते हैं। तो ये सुकृत क्या चीज़ है और सेजदा क्या चीज़ है। आपको मैंने बोला मुखर्जी कमीशन करने के लिए पीआईएल हुई थी बम्बई कैलकाटा हाई कोर्ट में। बादल बिनोय दिनेश गुप्ता, यहाँ आपको पता है, दिनेश गुप्ता के रिलेटिव सुनील मामा, सुनील कृष्ण गुप्ता, सुकृत, ये था। He died recently, so of course I know him. We haven't called him Sunil Mama. It is Sunil Mama, right-hand man of Suresh Chandra Bose, Netaji Sejda, who was sent by Sejda. He deposed before commission. He says, Suresh Bose told me to go there and meet my brother. और इनके बारे में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ इनके बारे में कि सुनील कृष्ण गुप्ता कौन है, नेताजी की फैमिली से कनेक्टेड है, ही वॉज पार्ट ऑफ व्हाटएवर। सो लाइकवाइज दिस इज सुनील कृष्ण गुप्ता, आरएसएस का चीफ, जिन्होंने, जिसकी वजह से आज मोदी आप कह सकते हैं कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, ही वॉज इन टच। लीव इट असाइड। नाउ पॉइंट इज, there are, I told you there are two what evidence you have that this man was Netaji. One, eyewitness account, credible eyewitnesses who saw this man identify him as Subhash Bose. They can't be wrong. Second, the correspondence or the documents recovered from Gumnami Baba, the letters he wrote to, let's say, Pavitra Mohan Roy or Leela Roy, etc., and what they wrote back to him, they support that line. So you have eyewitness account, you have the documentary evidence. Both are suggesting this man is Netaji. Justice Mukherjee Commission saw this case. He agreed with the first 2 points. He said, but I cannot agree that this man was Netaji because there were handwriting reports and DNA reports from the government side, which government lab, that were negative. And in light of this contradiction, he wrote in his report that there is no clinching evidence that Gumnami Baba was Netaji. He did not reject that line. He said there is evidence, but it is not clinching. That's what he wrote. But the impression everybody generates is that he rejected the whole thing. Anyhow, after Mukherjee Commission, commission got wound up. After 4 or 5 years, in 2010, by mistake, Justice Mukherjee was caught on camera admitting something which we were aware of earlier, and you can understand Bengali, so I'll play that part. In 2006, Amlan Ghosh, a documentary filmmaker, got this shocking confession on camera. But the problem ये हो रही है कि ठीक है, I'll not deal with the forensic part and this story is over for you. The point ये है कि when you have a story like this, what would you say? He's a DNA, he knows DNA. What would any person with scientific bent of mind would say? Okay, fine. There are some evidence. There are some people who were saying probably they were fooled, so on and so forth. But if the DNA, CFSL extensive DNA tests on denture and descendants rule out possibility that he was not he was not Netaji. What would you say to that? So that's the question, somebody need to ask. Well, I answer by saying, so I recalling my own teacher, man. When we were in, we went to university, MA Political Science किए थे हम लोगों ने, BA में गए तो सर ने हमको बोला कि biology is a science, chemistry is a science, but political science is the mother of all sciences. बढ़िया, आपकी रिपोर्टें का एग्जाम्पल दूंगा तो लंबी रात निकल जाएगी। अब मुझे ब्लेम मत करना कि मेरे वर्ड्स नहीं हैं। At Times of India among most corrupt countries, said Advani. Walmart flags India, China as corrupt nations. India most, आपको पता नहीं पैसे खा के रिपोर्टें चेंज होती हैं यहाँ पे। साइंस और पॉलिटिकल साइंस का फर्क दिखाता हूँ आपको मैं। आप में से कितने लोगों ने आधार कार्ड बनाया? सबने? It's very scientific. As you would go apply for visa, America and UK, you will undergo, biometrics होगा आपका, आपकी पूरी टेस्टिंग होती है। वो पैसा खा करके उन्होंने हनुमान जी का कार्ड बना दिया किसी ने। ठीक है जी, बराक ओबामा का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया था किसी ने यहाँ पे हिंदुस्तान में। आई टोल्ड पीपल इन अमेरिका, वहाँ मिल जाता है। डीएनए में बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट मैं आपको एक 2-4 दिखाता हूँ। एक पॉल वेल्स नाम का एक टूरिस्ट था जो मिसिंग हो गया था कश्मीर में। बाद में उसकी कुछ बॉडी हड्डी वड्डी मिली है, तो CFSL ने उसका टेस्टिंग करा, बोला ये पॉल वेल्स की हड्डी है। द हड्डी वॉज देन सेंड टू इंग्लैंड, मेट्रोपॉलिटन उनका जो इंग्लैंड में उनको भेजा, उन्होंने कहा जी ये मैच नहीं करा।
So you have in front of you a report from CFSL which says कि it is matching, and you have a report from England which says it is not matching. Which one would you believe? मुझे आपका तो पता नहीं है, लेकिन ये जो दिल्ली में बैठे हैं साहब लोग बड़े बड़े, जिनकी शरीर उनका यहाँ रहता है, आत्मा घूमती है न्यूयॉर्क के अंदर, तो कोई नहीं मानेगा देसी रिपोर्ट को। जब भी कोई लफड़ा होता है ना देश में, अब वो सारी रिपोर्टें बाहर जाती हैं अमेरिका में टेस्टिंग के लिए। वो पता है कि हाँ लैब में पैसे खा के चोरी करते हैं लोग। अभी मैं FSL दिल्ली, डॉक्टर साहब वहां पे ओपनली एलिगेशन लगे कोर्ट में कि पैसे खा के DNA की रिपोर्टें चेंज करते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया सीबीआई को, लास्ट की बात है, कोर्ट ने, ये स्टोरी एक होगी, मेरे पास और भी थी, सीबीआई ने ऑर्डर दिया कि इस पर इंक्वायरी करवाओ, ये पैसे खा के रिपोर्टें चेंज कर रहे हैं। और बाद में उन्होंने डेप्यूटी, ये खबर आई, सीबीआई बुक्स FSL डेप्यूटी डायरेक्टर सीनियर ऑफिसर फॉर फॉल्स DNA रिपोर्ट। लेट्स कम टू फैजाबाद इशू। दे वर बेसिकली 5-6 दांत वहां से मिले थे। I'll take on both handwriting and DNA. Let's start with DNA. 7 teeth were found, assumed to be of Gumnami Baba. They were first sent to CDFD Hyderabad. For whatever reason, they took out 2 of them. रिपोर्ट में कुछ मेंशन नहीं कि आपको कितने यूज करने थे, कमीशन ने कुछ नहीं दिया था, बट दे टुक आउट 2 ऑफ them. उसमें से उन्होंने बोला कि एक में से तो कुछ निकला नहीं, विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ इनक्रेडिबल, बिकॉज आप तो हजारों साल दांत से निकाल देते, बट एनीवे उन्होंने कहा हमसे निकला नहीं कुछ। दूसरे से जो लोसाई जो आप बोलते हैं आपकी भाषा में, वो निकला था, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू ड्रॉ कंक्लूजन। बट लकीली और अनफॉर्चुनेटली जो निकला है वो 100% मैच कर रहा है सुभाष बोस की फैमिली से। I happened to discuss this report with DNA expert. First was of course Maharshi, that's why he called me here. He saw the report and he mentioned of course कि this some पंगा है। आपके पास में 7 दांत है भैया, अगर आपके 2 में नहीं निकला और मैच कर रहा है जितना निकला, who prevented you from using a third one or even 4th for that matter? So there are problems. In fact, the expert who gave the report in this case was later found to have done something wrong with regard to Arishi Talwar case also. वहाँ भी उसने गलत रिपोर्ट दी है जानबूझकर। Now I have another evidence. For example, I'll go to the CFSL जहाँ पे केस इनका हमने सुपड़ा साफ करा है। I go outside the country and tell them कि आप लोग की जो एडवांस कंट्री हैं फर्स्ट वर्ल्ड में, अमेरिका, यूरोप, वहाँ तो भैया तुम DNA की रिपोर्टें टेस्ट करते हो फिर रिपोर्ट आती है। हमारे पास में ऐसी साइंस है कि हम लोग टेस्टिंग करने से 6 महीने पहले रिपोर्ट निकाल देते हैं, निकाल के वो प्लांट भी जाती है मीडिया के अंदर। हाँ, एकदम प्रूफ है, क्लियर कट प्रूफ है। DNA टेस्टिंग होने से 6 महीने पहले वो रिपोर्ट पड़ी है, सारी बातें रिपोर्ट है, जून 2004 की रिपोर्ट है CFSL कैलकाटा की। उसके 6 महीने पहले आनंद बाजार पत्रिका में उसका कंक्लूजन छप जाता है और ये कहते हैं कि हमको स्कूप मिला है। तुम्हें स्कूप कहां से मिल गया भैया? वो रिपोर्ट ही बनी है जून 2004 में, अनलेस यू हैव टाइम ट्रैवलर। वो डॉक्टर हु एक BBC सीरीज है कि वो दे कैन ट्रैवल अक्रॉस टाइम, स्टार ट्रैक में जाते थे पहले, स्टार वॉर्स में, वो टाइम ट्रैवल कर दिया कि 6 महीने बाद खबर उन्हें पहले मालूम चल गई उनको। वाओ। इन सिंपल लैंग्वेज, I will not prolong this. In simple language, what is the DNA test? Some of you are expert, I am not, but I am telling you in simple language for those who don't know. Actually, what happens? There is a machine. There is no human intervention in DNA testing. It's scientific. You put the sample in the machine. I am using also very simple language because it's all I understand. The machine will bring out a chart. You can't tinker with it. It's known as, it's a raw data, electropherogram. वो raw data की reading की report को कहते हैं DNA की report. It's like an X-ray. You see the X-ray and you see what is inside your chest. There is no report of DNA without an electropherogram. You have one, CFSL Calcutta. We came to know from our sources, electropherogram तो नहीं है, फाड़ के फेंक दिया। क्यों भैया? सीक्रेट रिपोर्ट थी, फाड़ा क्यों? तुम्हारी रिपोर्ट में प्रॉब्लम्स आ रही बहुत सारी। RTI लगाया, they have refused to give, they are not giving to us, they are changing the stands again. It has gone missing. Then unfortunately we found multiple problems with the report. Recently I had Gyaneshwar Chaubey, Professor Chaubey and Professor Pankaj Srivastava, who is part of the DNA fingerprint unit of the Chaubey is a very well-known DNA expert. दोनों रिपोर्टें उनको दी and he has given a detailed analysis. There are multiple problems and reports are not believable. He also appeared in television explaining this thing. जब ये television में गए थे हम लोग, तो we gave ample opportunity to the CFSL Calcutta to send their people. आ जाओ, टीवी में बात करेंगे आप लोगों से। आप जरा बता दो हमको
कि ये कैसे हुआ. Let's see one bite from that. Yaneshwar Chauraji, good evening. Thank you for joining us this evening. He is a renowned professor and also columnist. He is also a DNA expert. He teaches, he is affiliated and associated with the Banaras Hindu University. Mr. Gyaneshwar Chauraji, Professor Gyaneshwar Chauraji, please first tell me, you have a copy of the DNA report that was submitted by the CFSL to the Justice Mukherjee Commission. Is this a complete report? Yes, thanks to Mr. Anuj here. And is this a complete report? Were you able to study this report, sir? What did you find? Actually, it was really shocking for me because I'm really sorry to read this report. I never expected to have this kind of report from a very reputed lab which is known to do such a nice work in India on forensic. But this is really shocking for me because most of the things are really incorrect which one can read in one shot and one can find it out completely wrong. आपने क्या क्या देखा बताइए ना प्रोफेसर चौबे प्लीज एक्सप्लेन टू आवर. उन्होंने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट हमको सब दी है उसके बाद में. ये तो उस टाइम टीवी में हुआ था, बट कभी वो पब्लिक पर हम कर देंगे हमारी बुक में डिटेल. एनी हो, सो अनफॉर्चुनेटली फॉर अस हमारे पास में डीएनए के सैंपल नहीं है जो हम टेस्टिंग करवा सकें. बट स्टोरी इज फिनिश. इलेक्ट्रोफेरोग्राम के उनका सुपर साफ हो गया. ये हैंडराइटिंग का हमारे पास में लकीली हमारे पास सैंपल था और टेस्ट पर पॉसिबल. देखिए, जब हैंडराइटिंग भी इज ऑल्सो एडमिसिबल, ऑफकोर्स डीएनए की पावर ज़्यादा होती है, बट हैंडराइटिंग का भी बहुत पावर होता है. हैंडराइटिंग का रिपोर्ट्स में ये होता है कि एक्सपर्ट यूजली सपोज टू गिव रीजनिंग व्हाई ही और शी इज थिंक्स दैट दिस इज मैचिंग और नॉट मैचिंग. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली 3 रिपोर्ट आई थी मुखर्जी कमीशन के सामने. CFSL Calcutta, GUQD Shimla, and one report of an independent expert who was initially brought by Hindustan Times. That is, I was the pundit. He was the former head of the GUQD Shimla. He was the super boss. इंडिया का सबसे ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैंडराइटिंग का श्री लेट बीलाल कपूर जी. जो स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी उसमें थोड़ा सा उन्होंने मतलब एक्सप्लेन किया था कि हैंडराइटिंग देखो मैच नहीं कर रही. कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए थे. दिस इज एग्जाम्पल थोड़ा सा बना के 2-4 पन्ने की रिपोर्ट थी. लेकिन जो आपकी ये रिपोर्ट थी आपके मिस्टर मंडल की, डॉक्टर SK मंडल की, हु रिटायर्ड एज द FSL डायरेक्टर, इट वाज अ 1 पेज 2 पेज डू इट ऑल, दैट्स ऑल. सीधा लगे ये मैच नहीं कर रहा. बीलाल साहब का जो रिपोर्ट था वो उसने बनाया कम से कम 30 पन्ने का रिपोर्ट, और उसने 406 एग्जिबिट्स लगाए, 406 which were brought in huge boxes, this much big photographs, alphabet A, alphabet C, both in English and Bengali corresponding, and other things explaining, demonstrating that this is handwriting matching. इसे कहते हैं रिपोर्ट. और ये आपका जैसे आपका ये माशाल्लाह बैठा हुआ यहाँ पे मंडल साहब एक पन्ने में लिखता है कि मैच नहीं कर रहा. उसके बाद और भी रीजन है कि जब इनकी एग्जामिनेशन कमीशन में तो क्या हुआ था वो अलग कहानी है, बट दिस इज हाउ थी. तो एंड देन पीपल लाइक अपने ये मीडिया में से बात करने में जो झूठ बोलेगा वो जो जिसको सच बोलना है वो कभी डरेगा नहीं बोलने से पब्लिकली. When the 2 government-appointed experts said the handwriting samples did not match, an independent handwriting expert appointed by a leading English daily surprised everyone with his findings. Score writing coincidentally cannot match with each other until they belong to the same person. So I will again say that they belong to one and the same person, and this, according to me as an expert, is a very important evidence. It cannot be ignored. जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इतना गैप होने के बावजूद यू कैनॉट, देयर इज सो मच सिमिलर, 30 years का गैप है. जैसे यू कैनॉट से हु इज बाबा, हु इज सुभाष चंद्र बोस. वन ऑफ देम इज बाबा, वन इज सुभाष चंद्र बोस. जैसे उन्होंने एक बीलाल साहब ने बताया, जैसे एग्जांपल उन्होंने ह्यूज रिपोर्ट बट बताया, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऊपर का जो है ना ये नेताजी का हैंडलिंग सैंपल है, नेशनल आर्काइव्स का. बिलो इज सम लेटर फ्रॉम गुमनामी बाबा व्हाटएवर. वो एवरी टाइम नेताजी यूज्ड टू पुट मेनी टाइम्स वी नोटेड he wanted to insert something, he would put a particular caret mark, and he said that this man, the old man, he was trying to change his handwriting. Sometimes the hand is shaking because he's an old guy, but the expert tried to see the hand which writes the उसने कहा exactly वो वहाँ पे निकल के आ रहा है. It's a very high identifying value among others. ये पॉसिबल तो मैंने कहा ना डीएनए हमारे हाथ में नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट सैंपल हमको देने देगी नहीं, लेकिन हैंडराइटिंग मेरे पास में थी. तो सिंस दैट टाइम
हम लोगों ने 2 एक्सपर्ट को हैंडराइटिंग चेक करवाया, लीडिंग एक्सपर्ट फ्रॉम इंडिया, लीडिंग एक्सपर्ट इन अमेरिका. व्हेन आई वाज यूज माय फ्रेंड्स, माय फ्रेंड देयर जो वहाँ बन गए, दीपक जी and Abhishek Bose. Deepak ji is very ill. I'm very worried about him now. Deepak ji and Abhishek Bose, who is from Calcutta, but he's in Maryland. Both Indian Americans. IIT IIM का पास आउट है. इन्होंने उनको, मैंने बोला दीपक जी को, बोला दीपक जी how can I help you? He said Deepak ji get me an American expert. And we'll send reports that probably people understand. So they zeroed on Kurt Baggett in Texas. Kurt was not told about the case. Obviously, he wrote in his report. He did not even know. वैसे तो Google नहीं करेंगे. He's a bit too old for that. But then Kurt was not told what is it about. He was not told Anuj Dhar is seeking or Chandrachud Ghosh seeking. So he was approached by Deepak Nijavan, who is not in the picture any which way. He was given samples of Gumnami Baba's handwriting, which we procured from Pavitra Mohan Roy's house. Home here. जैसे ये उनका सैंपल है हैंडराइटिंग का, गुमनामी बाबा का. इसमें वो लिख रहे हैं, he has no rancor for Bapu. That means he means you're dead man. And though Bapu and Congress thought otherwise, your dead man has no rancor because Bapu at last turned a bold face and preached fighting for freedom and honor. And because hearing and becoming stimulated and emboldened by the radio exhaustion of your dead man, he stoutly opposed partition, and during the last fateful meeting, he wept like a child. He's talking about Netaji's broadcast from Germany, which caused a lot of upheaval, so on and so forth. Kurt Baggett ने भी डिटेल में समझू के पूरा बता दिया और रिपोर्ट दे दी कि भैया इज द सेम पर्सन और आई एम विलिंग टू टेस्टिफाई इन कोर्ट ऑफ लॉ. Ashok Kashyap ji, unfortunately, he died last month, but anyhow, he gave us a detailed report and he explained it's the same person. मीडिया में गए, मीडिया में वही है कि कर्ट साहब भी आने को राजी हैं, अशोक साहब भी आने को राजी है. हमने फ़ोन घुमवाया मीडिया वालों ने मंडल साहब को कि मंडल साहब रात को आ जाओ टीवी में, तुम्हारा बाप आ रहा है अमेरिका से, तुम्हें सिखाते हैं नेशनल टेलीविजन में कि हैंडराइटिंग टेस्ट कैसे होती है. नहीं आया, भाग गए. और ये कर्ट साहब की बात सुन लीजिए आप लोग. He was not even aware what was it all about. Those joining us this evening, but first I want to go across to Kurt Baggett. Kurt Baggett, the handwriting expert, joining us from Texas. Kurt, this is Anand here. I hope you can hear us and hear me clearly. Thank you for hear you clearly. Yes. Thank you for joining us live. You were sent. You were sent 2 sets of questions, 2 sets of handwritings, Q1 and Q2. Yes. Did you know that one of them belonged to Netaji Subhash Chandra Bose? I did not know anything about the handwriting. How long did you take to No, I analyze? did not. How long did you take to analyze the handwriting? Well, it took me several days. I didn't record my timing, but it's been about a week on it off and on. I do about 25 cases a month, so I worked on it and worked on this some more. And it took me several days to come to a conclusion. And do you, beyond doubt, claim that the handwritings were the same, of the same person? Yes. I have 3 opinions. My opinion is yes, no, or I don't know. If I form an opinion, then I feel like I could go to court and prove it, which is what I do most of the time. I go to court regularly to tell the courts my opinion. And so my opinion is that the same person wrote these 2 questions that you sent me, 1 and 2. We have with us in the studio a very learned gentleman by the name of Ashok Kashyap. Who is Ashok Kashyap, ladies and gentlemen? Ashok Kashyap is from a family of forensic experts who have been in this business since 1935. Top handwriting expert. Expert in examining fingerprints and handwriting. 53 years of experience is what this man has in examining documents. 53 years in experience. Consulted by courts and banks to verify documents. Approached by foreign courts to verify documents. And he's cracked more than 7,000 forgery cases. So if these handwritings are indeed a forgery, he should be one of the first people to make it out. The things, Mr. Kashyap, I need to ask you, since you're a master at catching forgery, could this have been forged? Because many people said that Gumnami Baba fraud hai.
They don't exist. So a lot of members within the Bose family itself thought the Gumnami Baba is a figment of imagination, is a fraud, is a plant, etc. Well, I cannot comment on that point, whether he is a fraud or charlatan or imposter. But as far as an examiner of person document, the comparison of handwriting is concerned. Yeah. I have compared the suspected writings with the standard writings very dispassionately, very impartially. And I have come to the conclusion that they have been written by one and the same person. Although with the passage of time, there have been certain normal variations. But these variations have not deviate us into disbelieving that there could be of different persons. We can't believe like that. So, yes, on the other hand, these normal variations augment our understanding of this case, that they are certainly of the same person. They are certainly of the same person. Now let me ask. So there you have it, the weight of balance of evidence, that you have the brain crush theory, about which I think no better person than Chacha Nehru can quote, who obviously was much more smarter and had more access to information that Shogata Bose has, even though Shogata Bose speaks better English, probably because he got American accent which Chacha Nehru did not have. Nehruji had a British accent, I believe. I cannot send you any proof, though you have circumstantial evidence that he died. Habibur said the problem is what, like, lot of contradictions, so on and so forth, and circumstantial. But Gumnami Baba, you have a direct forensic evidence. This is direct evidence, by the way. And you have the oral evidence, you have the documentary evidence. So the weight is completely in our favor. If only people were to study and talk and read about it. Murshid, I think that's done because it will take a very long time to get into other questions. So in case they have questions, I'll answer.